बट हर एक बिजनेस के लिए ना अलग अलग फंक्शंस होते हैं, एंड इन दैट केस समटाइम्स वी हैव टू डील विथ फंक्शनल बजट्स एज वेल, क्योंकि अगर हर बिजनेस के अलग अलग फंक्शंस होंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे फंक्शंस भी तो प्लान करने पड़ेंगे, राइट? सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? प्रोडक्शन कैन बी वन फंक्शन, सेल्स कैन बी अनदर फंक्शन, बट टू एग्जीक्यूट दीज मेन फंक्शंस मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, सो परचेज ऑफ मटेरियल इज वन फंक्शन, consumption is another function, labor cost is a third function, arranging overheads, infrastructure is another function। तो काफी सारे अलग अलग फंक्शंस होंगे जिनके बारे में हमको प्लान करना पड़ेगा। अब ये सारे फंक्शंस कनेक्टेड होते हैं, ऑल दिस फंक्शंस आर एब्सोल्युटली कनेक्टेड। अगर आपको एक मिल गया तो आपको अब फिर लाइन लग जाएगी। अब सोचो, मुझे शर्ट्स मैन्युफैक्चर करने, क्या मैन्युफैक्चर करना है मुझे? शर्ट्स। तो टेल मी हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ शुड आई परचेज? आई नो द क्वेश्चन इज वेग, बट क्या क्या ख्याल आते हैं दिमाग में? सबसे पहला यह ख्याल आता है कि भाई क्लॉथ परचेस कर रहा है, ठीक है, पर कितना कंजम्पशन पैटर्न है? 2 मीटर कपड़ा लगता है मुझे एक शर्ट बनाने के लिए, दो मीटर कपड़ा लगता है मुझे एक शर्ट बनाने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 2 मीटर कपड़ा लगता है एक शर्ट बनाने के लिए। तो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर सवाल उठता है कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है? तो प्रोडक्शन इस तरह से होना चाहिए कि मेरे पास 2000 का क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए, 2000 शर्ट्स का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास होना चाहिए, इतना मुझे प्रोड्यूस करना है। अगेन वी आर लॉक्ड। तो फिर हमको सबसे पहले यह ढूंढना पड़ेगा कि हमको कितना बेचना है। we'll have to first find out कि कितना बेचना है। एक बार पता चल गया कितना बेचना है तो हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं प्रोड्यूस कितना करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जैसे अगर मुझे पता चलता है 10,000 यूनिट्स बेचने हैं, इफ आई वॉन्ट टू सेल 10,000 यूनिट्स, I will produce 10,000 units. It's that simple. If I want to sell 10,000 units, I will have to produce 10,000 units. नहीं 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 नहीं, बेचने के बाद मेरे पास 2000 का स्टॉक चाहिए, ठीक है, तो you better produce 12,000 units. अगर 10,000 यूनिट्स बेचने के बाद you want a stock of 2,000 with you, that means 12,000 यूनिट्स बेचने चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, मेरे पास 1000 का स्टॉक पहले से पड़ा है। अरे भाई तो फिर 11,000 प्रोड्यूस कर ले। सो द मोमेंट आई गेट क्वांटिटी टू बी सोल्ड, आई कैन इजीली फाइंड आउट प्रोडक्शन क्वांटिटी बाय प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट, बाय प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट। एंड वो कैसे मिलेगा? क्वांटिटी टू बी सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सब्ट्रैक्ट होगा और मुझे मिलेगा क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। या तो कोई डाउट?
तो मतलब मुझे जब भी फंक्शनल बजट बनाना पड़ेगा, द फर्स्ट थिंग दैट आई शुड फाइंड आउट इज सेल्स बजट. सबसे पहले सेल्स ढूंढ लो. हाउ मच यू वांट टू सेल. एड क्लोजिंग, subtract opening, you will get to know how much you want to produce. And the moment you realize how much you want to produce, you can proceed further with whatever you want. Because the moment you realize how much you want to produce, you can easily find out how much you want to consume. Raw material consumption budget. The moment you realize you want to consume something, suppose मुझे 20,000 किलो मटेरियल कंज्यूम करना, तो हाउ मच शुड आई परचेज. 20,000 किलो, 20,000. What if I want stock of 5,000 after consumption of 20,000? That means I should purchase 25,000. What if I already have stock of 2,000 kgs with me? Then you better purchase 23,000. तो जैसे हमको प्रोडक्शन की क्वांटिटी मिली, वैसे परचेज की भी मिल सकती है बाय प्रिपेयरिंग परचेज बजट. By preparing purchase budget. So you first find out quantity of raw material to be used. That means consume. Add closing stock to that. Subtract opening stock from that. You will come to know quantity to be purchased. Quantity to be purchased को you will multiply it by price, and you will get your purchase cost in terms of rupees. I hope you understood this. फिर वो एक मटेरियल हो तो एक के लिए आएगा, अगर 3 मटेरियल है तो सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड फॉर ऑल द 3 मटेरियल्स. 3 कॉलम बना के. इफ यू हैव ओनली 1 फिनिश गुड्स, ये आएगा. इफ यू हैव मोर देन 1 फिनिश गुड्स, तो एक से ज्यादा कॉलम्स बना के खत्म करो, बट द बेसिक कोर कंटेंट विल रिमेन सेम. So raw material consumption budget, once you get, you can easily prepare raw material purchase budget. Raw material consumption budget will give you raw material purchase budget. In fact, the moment you come to know the production budget, you can find out number of hours required. You can also find out number of hours required, and the moment you realize your number of hours required, you can easily go for wages budget as well as overheads budget. So if you really want to crack functional budget question, this is all you need. Sales production, consumption purchase, sales production, hours labor, sales production, hours overheads. You're not supposed to think about anything else. Plus you also have a formula to know, you have a format to know quantity to be produced. Quantity to be sold plus closing minus opening, of course, of finished goods will give you quantity to be produced. And raw material purchase is consumption quantity plus closing minus opening will give you quantity to be purchased, which will be multiplied by price to give you purchase cost. So guys, copy this part first. Give the title functional budget.
Give the title functional budget first. Have you understood this whole chart? Trust me, whether it is inter CA or final CA, inter CMA, final CMA, any exam, you just need to know this for cracking down any functional budget question. आपका CMA का एग्जाम हो तो भी, CA का एग्जाम है तो भी, just know this much, you can crack any question on functional budget. Yes, sir. Till purchase cost, till here. Trust me, nothing else is required when it comes to functional budget. Shall I proceed, guys? Okay, shall I start? Now the question arises, how to get sales quantity. Now, if you want to find out sales quantity, generally there are three categories. Either they will give you, see, please understand one thing, whenever you deal with functional budget, you need to first find out sales quantity. So either that quantity will be given to you, or else they will give you budgeted sales figure, along with budgeted selling price. Sales divided by selling price will give you the answer. Or else they'll give you sales plus they will give you cost structure and profit. Are you getting me? They will give you sales quantity straight away. Fine, we'll pick it up, we'll start. Otherwise, they will give you budgeted sales and budgeted selling price. Company wants to earn 10 lakhs at a budgeted selling price of 100. So 10 lakhs divided by 100, 10,000 units will be the quantity to be sold. Or else they'll give you the cost structure, breakup of costs, material costs, labor costs, overheads, fixed overhead, variable overhead, factory overhead, admin selling overheads. Just get the total, add profit to that. You will be able to determine the selling price. And the moment you get selling price, you will find yourself in the second scenario. You can easily get the answer. Are you getting me? Plus, there will be a special situation. The special situation will be explained. But majorly, all questions can be solved with the help of this. Majorly, all questions can be sorted out. So, let us solve functional budget questions now. जो वो सेल्स के 3 कैटेगरी में कवर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका सोल्यूशन बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3. Notebook number, page number. Shall I start? A company is engaged in the manufacture of specialized sub-assemblies. Oh my God. You are manufacturing sub-assemblies. That means for you, sub-assemblies will be your finished products. Correct? The company envisaged that in the month of December, sales took a pattern of 3:4:2. मतलब quantity 3:4:2 के रेशियो में है of sub-assemblies ACB, MCB, DP. तो ACB, MCB, DP अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो they will be sold in the ratio 3:4:2.
अब आपको सेलिंग प्राइस दी है एसीबी एमसीबी डीपी की, एंड बाद में लिखा है कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट। कंपोनेंट का मतलब रॉ मटेरियल, कंपोनेंट का मतलब रॉ मटेरियल, कंपोनेंट का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। करेक्ट। तो 4 टाइप के मटेरियल्स है, बेसबोर्ड, IC08, IC12, IC26। तो बॉस 3 टाइप का फिनिश गुड्स बना रहे हो और 4 टाइप का मटेरियल लग रहा है। मटेरियल की प्राइस भी दी है आपको। आगे, डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड्स रिक्वायर्ड फॉर ईच सब असेंबलीज आर। लेबर का टाइम भी दिया है, ग्रेड ए ग्रेड बी नाम के 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स है, 8 आवर्स 6 आवर्स 4 आवर्स। ये लास्ट वाला आवर्स नहीं है, रेट है। 864 hours will be required, 1612 8 hours will be required। ग्रेड ए का रेट 5 पर आवर, ग्रेड बी का रेट 4 पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट 36 24 24, 36 24 24 per unit। The laborers work for 8 hours in a day for 25 days a month। मतलब 200 आवर्स पर मंथ काम होता है। एक दिन में 8 घंटा काम करते हो और एक महीने में 25 डेज काम करते हो। एक महीने में 25 डेज काम करते हो और एक घंटे का अगर 8 रुपए, एक दिन में अगर 8 घंटा काम करते हो, दैट मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ यू आर प्लानिंग, यू आर वर्किंग फॉर 200 आवर्स। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दी, ओपनिंग स्टॉक दिया है। They have given us opening stock। ओपनिंग स्टॉक में क्या आएगा? अच्छा, ये फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और ये मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक। करेक्ट। फिक्स्ड ओवरहेड्स अमाउंटेड टू 7,57,200 एंड मंथली प्रॉफिट टारगेट इज 12 लाख। 12 लाख रुपए का मंथली प्रॉफिट कमाना है, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है 7,57,200 की फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद। मतलब कुछ भी बोलो, यू कैनॉट अर्न प्रॉफिट विदाउट रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट। करेक्ट। तो इन शॉर्ट हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है? फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 7,57,200 और प्रॉफिट कितना चाहिए? 12 लाख। सो बॉस, आई वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी 19,57,200। आई वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी 19,57,200। यहां तक समझ में आया? I want contribution to be 19,57,200। The company is eager for reduction of closing inventories for December of sub assemblies and components by 10% of quantity as compared to opening stock। मतलब opening से 10% कम closing stock होगा आपका, opening से 10% कम closing stock होगा। ठीक है, तो सीधा 90% अप्लाई कर देंगे। 5 टाइप के बजट्स मांगे, सेल्स बजट मांगा है, प्रोडक्शन बजट मांगा है, मटेरियल का यूसेज, मटेरियल का परचेज और मैन पावर बजट मांगा है, शोइंग नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वेजेस। अभी सिंपल बताऊं, ये लास्ट 2 भी बोलते तो भी बाकी सब तो वैसे भी बनाने पड़ते। करेक्ट। जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द क्वेश्चन, आई विल बी बैक इन 5 minutes।
यस, वेलकम बैक। आगे सब लोग चलो। सो व्हाट डू यू हैव इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या दिया है? what do we need? Sales, production, consumption, purchase. Sales, production, hours, labor, right? तो in which way we have to go for sales budget? और मैंने कहा था sales budget के लिए there are 3 scenarios. Either sales quantity will be given, जो इसमें नहीं है. Let me give you sales value along with selling price. We have selling prices but we don't have value. और तीसरा कॉस्ट स्ट्रक्चर देंगे प्रॉफिट के साथ, यू कैन फाइंड आउट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने की जरूरत क्या? सेलिंग प्राइस तो पहले से मेरे पास। सेल्स वैल्यू मिसिंग है, दैट मींस हमने जो डिस्कस किया था, दैट विल नॉट वर्क आउट, एंड दैट इज व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस। बट वी हैव सम स्पेशल इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी लिख दी है। And what is that special information? What is that special information? You have contribution to be earned. अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन 19,57,200 कमाना है, अगर आपको टोटल कंट्रीब्यूशन 19,57,200 कमाना है, बराबर, तो यू हैव 3 फिनिश गुड्स विथ यू, ACB, MCB, DP, बराबर। तो तीनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मालूम होना चाहिए। इफ यू नो कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स, you can easily equate it with 19,57,200 to find out cost structure, to find out other things related to this question. एक बार मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया तो आई कैन इक्वेट इट विथ 19,57,200 एंड वी कैन फाइंड आउट क्वांटिटी वगैरह सब कुछ। सो दैट इज अ स्पेशल पॉइंट। तो अगर आपको वो 3 सिनारियोज नहीं मिल रहे सेल्स वाले जो मैंने बताए, तो दे विल गिव यू समथिंग स्पेशल दैट विल बी यूटिलाइज। समझ में आया? चलो, सो लेट्स गो फॉर statement of contribution per unit, ACB, MCB, and then DP. Why ACB, MCB, and DP? We need contribution. Contribution will be of finished goods, so we need finished goods columns. It is that simple. Is that part clear? Okay. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। मैं एक काम कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट स्ट्रक्चर करना है, तो पहले कॉस्ट स्ट्रक्चर ढूंढ लेते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर ढूंढने के बाद we'll compare that with selling price and we'll be able to find out contribution per unit, right? चलो, you have 4 different types of materials. Baseboard, which is purchased at 60, IC08, IC12, IC26. क्या प्राइसेस है बताओ? 20, 12 and 8. 12 and 8, बराबर। सबसे पहले ये ढूंढ लेते हैं कि कंजम्पशन रिक्वायरमेंट क्या है। आई टोल्ड यू
अगर आपको फिनिश गुड्स पे फोकस करना है तो फिनिश गुड्स पे फोकस करो, अगर आपको मटेरियल पे फोकस करना है तो मटेरियल पे फोकस करो। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया दैट यू आर फोकसिंग ऑन मटेरियल, तो फिर सारे मटेरियल एक साथ कवर कर लेना। एंड इफ यू हैव डिसाइडेड टू फोकस ऑन फिनिश गुड्स देन सी टू इट यू आर कवरिंग ऑल फिनिश गुड्स। एक पाव रेल में एक पाव जेल में नहीं, दोनों एक स्टैंडर्ड पॉलिसी आपको फॉलो करनी ही होगी, देयर इज नो चॉइस, अदरवाइज फिर मिस्टेक हो जाएगी। वैसे चलो मैं फॉलो कर रहा हूं फिनिश गुड्स को, तो आई विल गो दिस वे। व्हाट डू वी नीड फॉर प्रोड्यूसिंग एसीबी? 1842 1842 is needed. Okay, so we need 1 8 4 2। बोलता कुछ और है, लिखता कुछ और है, क्या लिख दिया? अरे मैंने क्वांटिटी उठाई और उसको मल्टीप्लाई किया प्राइस से। इफ आई नीड 1 8 4 and 2 units of raw material multiplied by pricing will give me the cost of 1 unit. 1 to 10 6, 1 2 10 10 6, 1 2 10 6, 1 2 4 8, 1 2 4 8। This is what we have. चलो फटाफट टोटल ले लो। 284. फर्स्ट वन Yes. 268 and 212. have you clearly understood this part? So, This will be followed by direct labor. This will be followed by direct labor. Unskilled, skilled. अनस्किल्ड का रेट क्या है? नहीं सॉरी, ग्रेड ए ग्रेड बी है ना। ओके, टेल मी द रेट। मेरे बोलो भाई। 5 and 4. हाँ 5 and 4. 5 and 4, so this will be 5 per hour, this will be 4 per hour. Okay, now see the requirement of number of hours. Grade A, 8 hours, 6 hours, 4 hours, 8 hours, 6 hours and 4 hours. I'm going by categories. 8 hours, 6 hours, 4 hours. Have you understood this? What about B? Tell me number of hours requirement. Tell me number of hours requirement quickly. 16, 12, and 8. So for 16, for 12 and for 8. This is what we'll have, correct? Yes. Yes, sir. So 104, 78, 52 will be your labor cost. And for variable cost, there is no need to find out anything.
बोलो। This will be your total variable cost per unit. Tell me. Four 24, 370, 288. Okay, very good. Let us write selling price on the next line. Selling price 520, 500, 350. 520, 500, 350 will give you contribution on the next line. Selling price minus variable cost per unit. So that comes to 96, 130, 62. Is this part clear? Is this clear? So guys, you already know per unit contribution. You already know per unit contribution. Am I right? Hello. Yeah. You already know per unit contribution, plus you also know the total contribution. So you can equate these two, no? देख लो. Let the total quantity be X. हाँ जी. Let the total quantity be X. Now if I assume total quantity to be X, you should know that you have three categories of finished goods which will fulfill your requirement of total contribution. ACB, MCB, DP. और रेशो क्या दिया है बोलो? 3:4:2, यानी कि 3/9, 4/9, 2/9, because the total is 9. तो यहां पे हो जाएगा 3/9x यूनिट्स, ये हो जाएगा 4/9x यूनिट्स, और ये हो जाएगा 2/9x यूनिट्स. ये होगी आपकी क्वांटिटी अगर आप टोटल क्वांटिटी को x मानते. मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब क्वांटिटी को आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिलेगी? टोटल कंट्रीब्यूशन की फिगर 288x अपॉन 9, 520x अपॉन 9, 124x अपॉन 9. ये होगा आपका कंट्रीब्यूशन हर एक प्रोडक्ट का. हमको इंटरेस्ट है टोटल कंट्रीब्यूशन. टू 88x प्लस 520x, डिनोमिनेटर कॉमन है ना, प्लस 124x अपॉन 999, 27,
नहीं आएगा। डिनोमिनेटर विल बी 9 ओनली। अभी बोलो मुझे टोटल क्या है, बोलिए टोटल। 932. 932 x मत भूलना, 932 divided by 9, and we all know that this figure should be 19,57,200. This figure should be 19,57,200. 932x upon 9. So 1957,200 into 9 upon 932. बोलिए। 18,900. So 18,900 is value of x, and x was your total quantity. If x is your total quantity, again this will be split. If this is your total quantity, this needs to be split, na? ACB, MCB, DP. 3:4:2. So this will be 6,300 units. This will be 8,400 units. And this will be 4,200 units. 6,300, 8,400, 4,200 units. This is your quantity sold. मिल गया आंसर। 6,300, 8,400 and 4,200. This is going to be your quantity sold. इस क्वेश्चन में इन्होंने सेल्स बजट मांगा है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू। सिर्फ उस रीजन की वजह से 520, 500, 350, उस एक रीजन की वजह से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। 520, 500, 350. And generally we stop at quantity sold, क्योंकि हमको quantity sold ही चाहिए होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने सेल्स की वैल्यू भी मांगी है, तो वैल्यू भी देनी पड़ेगी। बोलिए। Two lakh 76,000. 42, 32. 32 lakh 26. Is this right? 14,70,000. How much will be the total sales value? Total budgeted sales. बोलिए। 89,46,000. 89,46,000. अरे समझा। Since they asked me to prepare sales budget in terms of quantity as well as value, we found out value. Otherwise, किसी भी normal question के लिए we were quite okay with quantity. आगे बढ़े। Yes. चलो, since we are done with sales budget,
we can go for the next budget, and that is production budget. Production of फिनिश गुड्स, और अपने पास 3 फिनिश गुड्स है, एसीबी, एमसीबी, डीपी, पार्ट बी। प्रोडक्शन बजट, एसीबी, एमसीबी एंड डीपी, एसीबी, एमसीबी, डीपी. We will have to start with quantity to be sold, $6,300, $8,400, $4,200. Closing stock is given to be opening stock minus 10%. तो एक काम करते हैं हम लोग, we'll write down opening stock. ओपनिंग स्टॉक, बोलो। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है, फिनिश गुड्स की बात कर रहे हो तो 800, 1200, 2800. ये हुआ ओपनिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग 10% कम, %10 कम मतलब 90%. Have you understood this? समझ में आया क्लियरली? So this will be 6220, 8280, 3920. I hope this is clear. Chalo. So after production budget, any which way we are supposed to go for consumption budget. And you all know that consumption and purchase can be clubbed together. Consumption and purchase can be clubbed together. So we will be going for consumption budget only, but the name will be consumption and purchase, क्योंकि हम लोग को तो वैसे भी क्लोज ही कर, उसको क्लब ही करना है. The moment we find out quantity to be consumed, उसी में हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, उसी में से माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक to get a value of, to get a quantity of purchase. So C and D will be clubbed together, raw material, consumption and purchase budget. Since I have 4 different types of materials, since I have 4 different types of materials, 4+1 is the format. मैंने बताया था आपको, जिसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसके कॉलम्स. समझ रहे हो क्या बना रहे? Why do you need material? For producing 6220 units of ACB, for producing 8280 units of DP, 8280 units of MCB, and for producing 3920 units of DP. Correct?
Look at the consumption requirement for ACB. 1842. 1842. Consumption requirement for ACB is 1842. Okay. So 1, 8, 4, 2 is your requirement for ACB. Similar requirements you have for other type of material, other types of finished goods. Plus you also know their respective quantity structures. बोलिए consumption requirement now. One, two, 10, 6. 1, 2, 10, 6. And what about the third one? 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Okay then. Give me the consumption pattern, consumption quantity now. This is baseboard, I'll calculate. 6220, 8280 and 3920. बोलिए. Give me IC08 column. $49,760. 49,760. 16,560. 16,560. 7,840. 7,840. Lovely. And 24,880. 24,880. 82,800. 82,800. 15,680. 15,680. Okay. 12,440. 12,440. 49,680. 49,680. 31,360. 31,360. Lovely. The addition of all these figures column wise will give you quantity to be used. Quantity to be used. बोलिए. और कोई है? 18,420. 18,420. 74,160. 74,160. 23,360. Okay. 93,480. 93,480. Yes, sir. Okay. Now to this, we are going to add closing stock. Just give me 1 minute. Chalo, done.
Now again you're going to face the same situation. You're going to face the same situation. The situation is you need closing stock which is opening minus 10%. तो यहां पर भी वही काम कर लेते हैं. We'll write down opening stock first. That will give us purchase quantity multiplied by price will give us purchase cost in terms of rupees. Correct? क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन में आ जाओ. 16, 12, 6 and 4. 16, 12, 6 and 4. I hope you are clear with it. ओपनिंग का 10% कम है ना, ले लिया. So give me quantity to be purchased. Give me quantity to be purchased. $18,260. 18,260. 74,040. 74,040. 1,22,760. Okay. 93,080. Okay. And you guys already know the pricing. 60, 20, 12 and 8 if I'm not wrong. 60, 20, 12 and 8. Yes. So tell me the cost now. बोलो. 10,95,600. 10,95,600. Second one. 14,80,800. Okay. 14,73,000. 1473, 120. 7,44,640. So your total purchase cost will be 47 lakh 94,160. I hope this is clear. स्टैंडर्ड पैटर्न. आपको सिर्फ 4 चीजें ढूंढनी है. सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेस, या फिर सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स, लेबर. आंसर आ रहा है.
Tell me if you have any confusion in this. And the last one is it's a manpower budget. Now, when it is manpower budget, that means it is related to labor. If it is related to labor, labor के columns होने चाहिए. लेबर के टेबल पार्ट ई, मैन पावर, that means labor budget, grade A, grade B. Why do you need workers? Again, for producing 6220 units of A, 8280 units of B, 3920 units of C. मतलब ACB, MCB, DP. Correct? So guys, I need number of hours multiplied by 6220, number of hours multiplied by 8280, number of hours multiplied by 3920 for category A. And the same thing will be repeated even for category B. Tell me number of hours for A, grade A. 864. 864. So 8 hours, 6 hours, 4 hours. And what about B? 16, 12, 8. 16, 12, 8. Okay. Get the answer now. बोलिए. 49,760. 49,760. 99,520. B. 520. 99,520. Okay. 49,680. 49,680. 99,360. 99,360. 15,680. 15,680. 31,360. 31,360. Okay. So how many hours are required? Total hours required. 1,15,000. 1,15,000. 120. 2,30,000 to 240. 2,30,000 240. Guys, are you clear with it? Yes, sir. Yes. Now, in any normal question, I would have multiplied this with rate. अगर ये कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता रेट से, जैसा मैंने इस प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. लेकिन इन लोगों ने हमसे मांगे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स. मतलब इनको ये डिसाइड करना है कि बॉस, आज इनको पता चला सो मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू बी वर्क फॉर. इनको ये भी पता है कि एक महीने में काम कितना होता है.
अगर एक महीने में 200 घंटा ही काम होता है तो एक वर्कर सिर्फ 200 घंटे का प्रोडक्शन कर सकता है। और एक वर्कर अगर 200 घंटे का प्रोडक्शन कर सकता है तो 115 120 के लिए कितने वर्कर चाहिए? 255 पॉइंट 255 हाँ 575.6. 575. 575.6. Now are you going to hire a half worker, 0.6 worker? No. So basically that indicates that all said and done, but 576 workers need to be 576 workers are required to be hired. और यहाँ पे 115 1151.2. 1151.2 तो कितना लिखूं? 1152 लिखना। मैथ्स का राउंडिंग ऑफ टेक्निक अप्लाई मत करो यहां पे, समझाता हूं। इफ यू हायर 1151 वर्कर्स, कैलसी लो, 1151 वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 200, मैक्सिमम कितने आवर्स का काम होगा? मैक्सिमम कितने आवर्स का काम होगा? 3200. तो 40 घंटे का शॉर्टेज आएगा ना। तो मैथ्स का राउंडिंग ऑफ टेक्निक अप्लाई नहीं करने का, यू विल हैव टू टेक वर्कर टू द हायर साइड। सो गाइज, मुझे प्लानिंग की वजह से ये पता चला कि बॉस इतने मेरे आवर्स की रिक्वायरमेंट है, एक बंदा इतना काम कर सकता है, तो मुझे इतने वर्कर्स चाहिए। और जब मुझे पता चल गया कि आई विल नीड 576 and 1152 workers, each one will be paid for 200 hours. So how many hours will be paid for? It will be 115 200 and 230 400. Is this clear? Yes, sir. देखो काम कितना हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। If I have hired 576 workers, I have to pay each and every one of them for 200 hours. उतना पैसा तो मुझे देना ही होगा। I cannot tell them कि तेरे को मैंने fractional था तो तेरे को राउंड ऑफ करके ले लिया। If a worker is hired, he will be paid for 200 hours. So all 576 workers will be paid for 200 hours. So 115 200 will be your 115 200 will be your total hours paid for. This will be multiplied by rate. कितना है? 8 and 4 है। Five and four. So 5 and 4. 5 and 4. Okay. That gives you labor cost to be incurred. Tell me. 5,76,000. 9,21,600. This is what you're going to spend next year. So you should know the total of it. Total labor cost. बोलिए
97,600. That's the advantage of preparing labor budget. It does not only give you the cost to be incurred, but it also tells you the requirement of staff. बॉस, मैं पहली बार बिजनेस लॉन्च कर रहा हूं, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे लेवल ऑफ एक्टिविटी डिसाइड करनी है, तो मुझे पता चलता है कि मुझे 576 एंड 1152 वर्कर्स हायर करने ही होंगे. आई कैन टेक डिसीजन रिगार्डिंग दिस. और अगर मैं इतने वर्कर हायर करता हूं तो हर एक वर्कर को मुझे 200 घंटे का पैसा तो देना ही है बॉस. आई डोंट हैव अ चॉइस. हर एक वर्कर को मुझे 200 घंटे का पैसा देना ही है. तो काम भले ही इतना हो, पैसा तो इतना जाएगा जेब से गारंटेड पेमेंट के हिसाब से. तो जो पैसा जाएगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. आई जस्ट नीड टू नो द कॉस्ट दैट आई विल बी इनकरिंग, द अमाउंट दैट आई विल बी स्पेंडिंग. इन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पूछा होता तो मां कसम इसी को मल्टीप्लाई कर दिया होता हमने, नंबर ऑफ आर्ली रेट से, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. बट सिंस दे आस्क्ड अस, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स 576 एंड 1152 है तो बॉस हर एक को 200 घंटे का पैसा जाएगा. तो इवन इफ आवर्स वर्कड आर लेस, आवर्स पेड विल बी मोर. Is that part clear? Yes, sir. Okay, then that was your functional budget. I hope this is crystal clear. Sales, production, consumption, purchase. Sales, production, hours, labor. Sales, production, hours, overheads. आपको इन बॉटम में क्या मिल रहा है? मटेरियल परचेज, लेबर एंड ओवरहेड्स, तीनों मिल रहा है. You can easily find out total cost for yourself for the next year. That's the advantage of budget. समझ में आया? शॉर्ट में याद रखना, फिक्स फ्लेक्सिबल में स्प्लिट योर कॉस्ट एज वेरिएबल एंड फिक्स्ड. वेरिएबल के लिए पर यूनिट, फिक्स के लिए टोटल. और फंक्शनल बजट में सेल्स, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स, लेबर, सेल्स, प्रोडक्शन, आवर्स, ओवरहेड्स. और सेल्स क्वांटिटी के लिए 3, आइदर इट विल बी गिवन और दे विल गिव यू सेल्स एंड सेलिंग प्राइस, और दे विल गिव यू सेल्स एंड यू विल हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट. और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दे विल गिव यू सम हिंट. जैसे इसमें तीनों कैटेगरीज में हम लोग बैठ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन दिया था, तो कंट्रीब्यूशन वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. आई हैड टोटल कंट्रीब्यूशन, तो आई फाउंड आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड आई सॉल्व इट. सो दैट वाज योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैन पावर बजट, जिसमें डिफरेंट पॉइंट ये था, क्वांटिटी मांगी थी. सो राइट डाउन अ नोट. सिंस नंबर ऑफ वर्कर्स वर आस्क्ड, we did not prepare labor budget. Since number of workers were asked, we did not prepare labor budget. We did not prepare labor budget on the basis of hours worked or required. We did not prepare labor budget on the basis of hours worked or required, but on the basis of hours paid. Each worker will be paid for 200 hours.
Each worker will be paid for 200 hours. And therefore we had to find out. And therefore we had to find out and therefore we had to find out and therefore we had to find out total hours paid to all the workers. Total hours paid to all the workers. We had to find out total hours paid to all the workers. Total hours paid to all the workers. Is this clear? Now let's begin with the last chapter.